सही है, JIT ठीक है, क्या ट्रोलिंग हुई है, क्या गड़बड़ हुई है, वो तो खुद भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे ये लोग जितने खड़े। अगर ऐसा है तो आपकी अंडरटेकिंग इलेक्शन के बाद लेके चले जाएं, कोई हर्ज नहीं है। पॉइंट हमें देखना है JIT क्या होती है, कानून में इसका है जिक्र नहीं है, ये सारी बातें आप तैयारी करके आइएगा, क्योंकि अभी तो हमें जब केस आएगा आई कैन ओनली थिंक अलाउड कि ये सारी बातें सवाल उठेंगे। 8 को इलेक्शन है, उसके नेक्स्ट वीक में रख लें, 8 के बाद जो है 8 में रात है, जुम्मा आता है, तो आज मंगल कोई नेक्स्ट के बाद ही होगा। एहतियात से रिपोर्टिंग इलेक्शन के दौरान ये जो होगा इसका मतलब कुछ और होगा। एहतियात से रिपोर्टिंग करें। You can discuss this with any FIA director or any person is present in this. The notices are under section 160 of the CRPC. जी 160 का notice है. Notices. And the which provision? 160 of CRPC. These are inquiry stage. Inquiry stage के ऊपर आती है. Inquiry stage notices. And as it is just like a call-up notice. जी call-up notice. And it's not a criminal case. Not yet, sir. Not yet. So it is only, and as I had submitted an undertaking yesterday, and so the inquiry officers are going to strictly follow what was submitted before this court. We are not asking, we are not going to stop you for the inquiry. We only say कि ये जो 5-6 दिन बीच में है, इसमें 2-3 दिन वैसी छुट्टियां आ रही हैं, हफ्ते को आपकी भी छुट्टी है, फिर इतवार है, फिर पीर है, 1-2 दिन ही तो 3-4 दिन है वर्किंग इसमें, तो अगर इसको अगर आप 8 के बाद वाले वीक में ले जाते हैं तो कोई चीज रुक नहीं रही। वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप यू, neither they are stopping you to do anything. They only request for some time. In the meanwhile, they will file the petition here. The matter will go to the committee, and the committee will decide. And we will also see the constitution of JIT under the law, whatever their allegations and counter arguments made by you. इसको देख लें, अगर इसमें कोई, मेरा नहीं ख्याल है कि इसको रोकने में कोई बहुत बड़ा हर्ज है, मतलब things will not be. At this stage, if I may say, at this stage, it is only the statements that have to be recorded, nothing beyond that. What is statement? So, if there are any, under 160, my lord, if there are any screenshots of any tweets which were on the Twitter which were tweeted, or any. So you are saying no coercive action will be taken? Yes, yes. अच्छा, सर जिन ये तो आपका मसला हल हो गया। नहीं सर, लेकिन जिन जर्नलिस्टों ने इलेक्शंस में ड्यूटियां करनी है, अपनी दूसरी ड्यूटी के, वो FIA की पेशियां भुगतेंगे सर, बजाय इसके के इलेक्शंस के बाद हो जाएगा वही मसला। सर ये इलेक्शंस आपको हम अटॉर्नी जनरल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी ऑर्डर नहीं कर रहे सकते। इन प्रोसीडिंग्स में तो ऑर्डर नहीं हो सकता, लेकिन सर जिस तरह वो इंसिस्ट कर रहे हैं उससे नहीं हो सकता। थोड़ा सा व्हाई डोंट यू थोड़ा सा इसके अंदर आप क्या है इलेक्शंस? आज क्या तारीख है, कितने दिन today is 30th, so we are just left with 8 days। 4-5 दिन रह गए, इसको कर दे आप कह के इलेक्शन के बाद। जरा प्रोफेशन का इशू है कि भाई they are running here, there are so many stories developing, why they are unable to perform. Show some grace for the journalists also. Of course, they have to. You should thank him, not us. They have to do their professional. We are saying he's there thanking us. We don't thank us, thank you. ठीक है, अब ये सर आपका थैंक यू यहाँ पर अदा करेंगे, उनका चाय के कप पे करेंगे। हमें शुक्रिया नहीं करें, इनको शुक्रिया करना है तो करें, अगर आप करना चाहें। सर इसमें लिख लें, इसमें लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है सर। आप इसमें पार्टी बनना चाहते हैं ना? जी जी। अच्छा, They'll have to. पिछला ऑर्डर कहाँ गया? वैसे ये जो डिस्कशन हो रहा है ऑन जनरल पॉइंट्स, दिस काइंड ऑफ डिस्कशन शुड बी हेल्ड ऑन एवरी. This is a serious discussion where freedom of expression, truth, you heard speech. You know, every country deals with it differently. I mean, sort of in Thailand, there's one very severe kind of law, which is their country. That's right. In America, is the First Amendment. Here, we have 7 restrictions in the freedom of expression. In Europe, you can't even say something. Exactly. You know, it's called something denier. So it's a variable thing. And I always stress most towards the truth. I don't know why, but that's my personal thing. It doesn't, the law doesn't really say that. इसमें लिखिए कि कल का ऑर्डर का है। हाँ हाँ, अच्छा शुक्रिया।
Abdul Qayyum Siddiqui points out that the 4 journalists who, in the order passed yesterday, he had forgot to mention, in yesterday's proceedings, Notice. he had forgot to mention the attack on Mr. Absar Alam, who was a journalist, and as such, paragraph 2 of yesterday's order may be read to include his name as well. Full stop, order accordingly. So it extends the report that you have to submit. It will also apply to Mr. Absar Alam. इसमें लिखिए, Mr. Afzal Butt states that he is the president of the Pakistan Federation, Federal Union of Journalists. Pakistan Federal Union of Journalists, and wants to become a party to these proceedings. Full stop. He may move a appropriate application and may also submit suggestions as to how to proceed further with these cases. Full stop. आपका नाम लिख दें प्रेसिडेंट पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पे आपका नाम प्रेसिडेंट का कैसे लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन Press Association of Supreme Court. The president of the Press Association of the Supreme Court states that they will be filing a petition with regard to press freedoms and the difficulties being faced. Full stop. Office to immediately number the same and to register it as a constitution petition under Article 184(3) of the Constitution, comma, number it and place it before consideration of the committee, capital C, constituted under the Supreme Court Practice and Procedure, bracket close, Act, comma, 2023. अब हम कह तो नहीं सकते मगर इसी के साथ ही वो कनेक्टेड हो जाएगा करना चाहते हैं आप पिटीशन फाइल करना चाहते हैं पार्टी बनना चाहते हैं हमारी पिटीशंस में पार्टी बन जाए पिटीशन फाइल करें नहीं अगर आप इनके पिटीशन में पार्टी बन रहे हैं तो फिर तो वो खुद ही फिर तो अलग एप्लीकेशन होगी अगर आप अलग उनके साथ आना चाहें तो आप भी बन जाए उनसे पार्टी 1 2 3 4 मतलब अलग भी आप करना फाइल करो ना सेपरेट पिटीशंस हो जाएंगी वो जरा जैसे भी आप लोग कर रहे हैं फिर वो एप्लीकेशन दे रहे हैं वो पता नहीं किस केस में एप्लीकेशन दे रहे हैं पुराने में एप्लीकेशन दे रहे हैं आप नया तो कोई है नहीं अभी इसी केस में पहले हम आपके लिए वो उसको थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देंगे आपके दोनों दरवाजे खुले इस तरफ आना चाहें उस तरफ आना चाहें जैसे भी सोच समझ के आप कर लीजिए और आप अपनी फाइल करेंगे 184 में अच्छा फुल स्टॉप आपने क्या कहा था हाँ वो लिखिए number of concerns were addressed and learned attorney general reiterated the undertaking given in the court and further on the request of the journalist stated that that the matter meeting of GIT that matter regarding journalists will not be taken up or proceeded will be taken up or proceeded by FI before the elections. ठीक है and thereafter अगर करना all right ठीक है जी ठीक है it's your undertaking not our order it's your undertaking और अगर नई डेट होगी तो उसकी नई नोटिस इश्यू होगी जाहिर है पुरानी डेटें तो गुजर चुकी हैं उन नोटिस There would be a follow-up इसमें notice. लिखिए अब अगला लिखें Follow-up notice. Mr. Heather Waheed he learned Mr. Heather Waheed if follow-up notices are to be issued they will be issued after the elections. ठीक है ना फॉलोअप तो करना पड़ेगा डेट Mr. Heather Waheed, comma,
Council in CP number 27 of 2022 stated, made submissions, number of questions were raised, and he stated that he will be attending to them if some time is granted by filing a concise statement, and requested that the matter be adjourned to a date after 2 weeks. How much time did you want, Mr. Harinder? Oh, that's fine. Okay. Even less than that. Okay, full stop. आप लोगों को भी बाद में चाहिए. All present. Also stated that this case may be adjourned to a date after the elections. Yes. And which will also grant them time to file the referred to petition, whoever wants to do so. कुछ और रह गया बात? And on a lighter note, my friends from journalist community might bear in mind the observations by Her Ladyship Justice Hilali in the meantime. Sir, Attorney General is saying this about Judge of the Supreme Court. This means it is going to have a chilling effect, and Justice Sarat Hilali's statement is going to be used against us. Please. ये देखिए, ये आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट की आपने 4, 5, 6 वायलेशंस करनी है आज. और अपना It should not interfere in cases where you are not. अब आप, हम जिक्र नहीं करना चाह रहे थे, मगर आपको मैं दिखाऊं, ये मेरे पास ऑलरेडी था. और ये मैंने पढ़ा था, मैं इसका आपको शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा था. आप इनके हाथ ना लग जाए आपके दोस्तों के. ठीक है, तो then we will give a date. Zara, let us see, because a number of important cases are coming up. I don't know when we will give a date. अगर खुदा ना खासा कोई First week of March, sir. अगर कोई, हाँ, First week of March. किसी को इतराज है? I have no objection. हाँ? No objection, sir. Okay, as suggested. As suggested. As ठीक है. सर फरवरी का लास्ट वीक उसकी वजह ये है कि शायद आपस में बात कर लेना, हमें कोई इतराज नहीं. आप ये कल लगाएं, हम कल लगा देते हैं. फरवरी का लास्ट वीक में प्लीज गिव अ डेट. जरा कंसेंसस से भी कर लेना आपस में. फरवरी का लास्ट वीक सही रहेगा. फरवरी का लास्ट वीक. किसी को इतराज है लास्ट वीक का? First week of March. सही है भाई. ये आपका सूली मौकिफ है. फरवरी के लास्ट वीक में अब टॉस कर लें, आप पे छोड़ देते हैं सदर साहब. First of March. हाँ? First week of March, ठीक है. चले, देखिए अब आप, he is the president. As suggested, adjourn to a date in the first week of March. Thank you.